नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं हूं आनंद, मेरे साथ विजय। वी आर बैक विद सम फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग एनालिसिस फॉर द निफ्टी, बैंक निफ्टी। स्पेसिफिकली एक हाई प्रोबेबल हिस्टोरिकल पैटर्न प्ले होने का चांस है निफ्टी में यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम प्राइस एंड वॉल्यूम एंड एलियट वेव, वी विल बी आल्सो शेयरिंग one historical pattern which has been observed to have a very high probability in the market, specifically in the nifty indian markets में। उसके बारे में भी आज कुछ चर्चा करेंगे। आपको कुछ नया ऑब्जर्वेशन सीखने को मिलेगा मार्केट से। होपफुली यू विल लाइक दैट। अब मार्केट में वो इस बार फिर से रिपीट होता है या नहीं, वो तो समय ही बताएगा आगे, अगले 2 वीक्स के अंदर, 3 वीक्स के अंदर। वॉट एवर इम्पोर्टेंट इज what the historical pattern says and what is its likely outcome for the present year. So before we move ahead, first प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से हम देखते हैं क्या बन रहा है मार्केट में व्यू, उसके बाद में और आगे का चर्चा करेंगे। सो लेट अस लुक एट चार्ट्स। ये निफ्टी का चार्ट है। दिस चार्ट इज क्लियर। एक चार्ट अगर आपको एक लेवल अगर आपको याद हो, जो हमने बार बार पिछले वीडियोस में कहा है, दैट लेवल वाज 15,900। these highs of around high volume candle के पास का रेसिस्टेंस। ये बार बार पिछले 2 वीडियोस में कहा गया है कि 15,900 जब तक निफ्टी नहीं निकालेगा तेजी का चांस नहीं बनेगा। 15900 क्रॉसेस देन लाइकली टारगेट ऑफ 16,400 16,800 प्लस ट्रिगर्स। तो अभी क्या हुआ है, लास्ट वीक निफ्टी ने एक पुल बैक दिया 5900 तक, फिर वहां से एक डाउन मूव दिया एंड आफ्टर दैट इट हैज स्टार्टेड रैलिंग पिछले 2 वीक्स के अंदर। इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे जब ये सेलिंग आया था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो 15,900 950 क्रॉस किया था मार्केट ने इन जुलाई सीरीज। ऑब्जर्व दिस वॉल्यूम्स ऑन दिस रेड कैंडल, दिस वॉल्यूम्स वर लेस कंपेयर्ड टू दिस ग्रीन वॉल्यूम्स ऑफ बाइंग वॉल्यूम व्हिच वे सीन अराउंड 15,500। यानी कि जो मूव यहाँ से लेके आया था, अगर स्मार्ट मनी को यहाँ पे इतने रेसिस्टेंस पे सेलिंग करना होता तो यहाँ पे वॉल्यूम्स हाई रहना चाहिए था, वो नहीं थे। अल्टीमेटली नेक्स्ट डे वी हैव सीन वेरी हाई वॉल्यूम एंड 15900 क्रॉस्ड, इट वाज अ वन साइड मूव। तो अब आगे का पोजीशन क्या बनता है? One thing to be observed is this Friday's volume. These are very dull. Second dull volume since last many days, many sessions. These Friday's volumes, if at all they get any follow through on a downside on a Monday, Nifty sustains below this 16,150, 140 on Monday with higher volume. The next important support to be watched will be 15,950, 16,000 zone. If Nifty closes below 15,950 again, then this move will be like a false move and the down move toward 15,200 will be very fast. Very fast it can be. This is the one possibility. As of now, what looks like a highly likely possibility or outcome as per the present price and volume structure is, since 15,900 is crossed, then the next logical target for this, एक तो 15,900 से 15,200 जो 700 पॉइंट का ब्रेकआउट आता है, वो इट कम्स अराउंड 16,600, यानी कि 16,500 प्लस। एंड इफ आई अज्यूम दिस ब्रेकआउट ऑफ 16,000 के जो गैप है 16,000, 16,200, 15,950, 16,200 के पास का, इफ दिस गैप्स गेट फिल्ड अवे, जो ऑलरेडी फ्राइडे को हो चुका है, बट द वॉल्यूम and candle price action was not too interesting. So अगर follow through मंडे को या ट्यूसडे को इसके हाई के ऊपर आ रहा है, then we can expect कि target of 16,500, 16,600 can come soon in a Nifty. But ultimate target for this breakout, which comes to around 16,780, 800 वाला जो ये जो सेल ऑफ है,
Why it comes over here? For a simple reason, there have been back-to-back high volume candles which we have seen before this breakout. From here when it starts, यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर नीचे देखो 1 2 3 4 5 high volume candles. Specifically these two are very high volumes which have been highest since many sessions, or you can say couple of months. 2-3 months के highest volumes आए हैं यहाँ पे. उसके बाद में ये वॉल्यूम्स जब हाई आए थे इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला इस वॉल्यूम के बाद. एंड अगेन ये जो हाई वॉल्यूम्स यहाँ पे आए फिर यहाँ पे आए, they have seen a good follow through on upside. These volumes good follow through on upside. These volumes follow through on upside. Again these volumes follow through on upside. This everything indicates that they have been excellent absorption by the smart money over here, whatever the retail has fed them. So these have a potential to target around 1000 points from this breakout level, which comes around 16,800-900 level. So it also gives us this target possibility. So as per price and volume, the highly likely outcome is, as long as 15,900-950 is defended closing basis, look for the target around 16,800 in July series. So any dip towards 16,000 in a coming days, Monday आए, Tuesday आए या next week में कभी भी आए, towards 16,000 यानी 16,050, 16,000 के जोन में आ सकता है, हो सकता है 15,950 भी hit करे in flash. It will be an interesting long opportunity for the target of 16,800 in July series. This is as per price and volume on a daily, on a short-term trading basis for the month. Now, before we move to historical pattern, let us look at what does Elliott Wave is telling us. Over to you, Vijay. Thanks, Anand. Elliott Wave wise, long term wave count में तो कोई change of story नहीं है. We expected कि 15,000 break होगा June series में, but वो काम हुआ नहीं है, defend हो गया है. However, if I am looking at the internal wave count of this correction, one possibility is that the 15,180 जो भी low लगा था recently, there the correction has ended. But looking at 2 or 3 factors, मुझे लग रहा है कि शायद एक लो और आएगा. अब सवाल ये है कि पहले 16,800 फिट करके फिर नीचे जाएंगे और उससे पहले ही जाएंगे. I think that's something that we need to look at. Why I am saying it is because of this. ये जो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, ये जो similar complex corrections थे, इनका जो correction था, I think this was around 25% and this was some 28%. उस टाइप का था approximately. But अभी जो हमारे current correction है वो इतना deep नहीं है. It is actually some 18.5% if I'm not wrong. Let me just do. So this is approximately 18.5%. So percentage wise, looking at historical patterns, it looks like thoda sa bacha hua hai. So what I did was I went back to these two corrections and I tried to look at the internal wave count once more. थोड़ा carefully देख रहा था मैं. WXY एक मैंने डबल एक्स लगा दिया यहाँ पे, in the sense कि एक करेक्शन खत्म होके फिर दूसरा करेक्शन भी हुआ था. So ये डबल एक्स है, तो उसके बाद आप देखोगे तो ABC, right? So just for everybody's easy understanding, इसको डबल A, डबल B, डबल C रखा है. ये करेक्शन हुआ था and also price breached the 200 week moving average. ये मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था. यहाँ पर भी आप देखोगे ये डबल एक्स के बाद एक ABC
इनफैक्ट एक और छोटा सा करेक्ट मतलब स्विंग आके फिर नीचे आए थे हम। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अपस्विंग था यहाँ पे, हम उस स्टेज पे हैं करंटली। दैट्स व्हाट आई गेट द फीलिंग। ये देखो डबल एक्स के बाद एक जो अपस्विंग आया है, राइट? सो मे बी देयर इज अ सी वेव डाउन स्टिल पेंडिंग। उससे क्या होगा, एक चीज, this whole correction will probably achieve equality, which is this wavelength will be equal to this wavelength 100%, which happens around 14,400. दूसरा, ये जो 200 week moving average है, it is slowly climbing up. So maybe by the time this correction completely finishes, ये moving average भी थोड़ा और ऊपर चले जाए around 14,500. वो एक possibility है. And if I go down to the daily scale, one way to count this entire correction is कि चलो 1, 2, 3, 4, 5. This entire wave was a 5-wave correction. Now, in a complex correction, it can be combinations of 3 waves and also 5 waves. So अगर ये 3-wave correction था और ये भी 3-wave correction था, तो क्या ये 5-wave correction था? Or the other way to look at it is, if this is a 5-wave correction and I can label it as say a capital A, then capital B आएगा, फिर capital C आएगा, right? These things are on the table. मैं 100% surety के साथ नहीं कह सकता, but these things are very much possible. दूसरी बात यह है कि this structure is not at all confidence inspiring to me because it does not look impulsive to me. One more thing I would like to add, Vijay, over here. इतने deep corrections के बाद में ये जो pullback आ रहा है, if you observe this, it hasn't crossed the last leg in a shorter time or equal time. Yes. Which has not been the case which we have observed historically. जब भी repeat होता है, bottoms बनते हैं normally, at least equal pullback आता है. If you move back to March 2020 low, which आज के सुबह webinar में मैंने group वालों को बताया था, same thing. If you observe this on a daily chart also, इसको daily में करिए. From lows, Nifty has rallied approximately or exact 20% kind of move within 3 to 4 days to make it equal to the previous swing. ये जो green candle से blue candle से नीचे आया फिर ऊपर गया है. Red candle which before that, the red candle which marked before that. Yep. उसके पहले 3 days पहले का move देखो. From there, this down move, V shape kind of. यानी कि even in such a down move, Nifty could travel approximately 20% kind of move in 3 to 4 days max. Yes. This is the signs of a durable bottom. So present bottom, even I am quite skeptical कि ये bottom बना है, and quite I have a 90% probability कि ये bottom एक बार break होगा, and we may get our original targets of 14,200, 300 getting tested. अब ये कब आता है? 1 month, 2 month के बाद आता है. Let market decide. Also, one more thing which you have highlighted rightly is 18% का correction जो आया है, and we have already mentioned in our January video, we have seen normally 20% plus kind of correction at least 2 years में एक बार history में, and this time it is yet to come. Yes. This also points कि durable bottom का possibility यहाँ पे little doubtful कि ये bottom strong है for a big up move, but ultimately market is supreme. Let us respect that. Correct. So मैं जो कह रहा था कि ये structure अभी मेरे को पूरा bullish नहीं लग रहा. It doesn't look like an impulse wave. So if I go down to the hourly scale, ये देखो सारे overlapping waves हैं. इस wave के top से ये overlap कर गया, right? Even this bottom is overlapping with this top. So I cannot count this as 1, 2, 3, 4, 5, right? So this whole thing looks like a corrective bounce to me. यहाँ पे अगर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ खत्म हो गया, तो ये पूरा हो सकता है it's a simple ABC, or
like I've labeled here WXY, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेक्शन रहा है. So अगर ऐसा है तो मे बी yesterday's open itself was the top of this correction. That's very much a possibility. दूसरी possibility है कि थोड़ा और kick up करें. So Monday Very or hard. Tuesday will be very important, Very as the dull important. volumes have identified. Exactly. Those 2 days are going to be very, very important. The other thing जो मैंने अभी यहाँ draw नहीं किया है, this also looks like a wedge structure. टिपिकली अगर ये A वेव है और ये B था तो ये पूरा C वेड्ज के अंदर था. सो काफी चीजें हैं ऐसे जो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं कि ये बहुत दूर जाएगा ऊपर. प्राइस वाइज यस, price is above both 20-day moving average as well as 40-day moving average. That's a very good sign, no doubt about it. On a weekly scale, it is way below the 20-week moving average. 20-week moving average is 16,585 approximately. तो आनंद जैसे तुम बोल रहे हो सकता है 16,500 600 तक ये खींच के फिर नीचे आए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है. What is also important is to look at the major components of Nifty. वो कैसे behave कर रहे हैं. Reliance, इसने खून बहाया बहुत, and it is right now at a very important level of this 2370. Why is it important? क्योंकि ये जो कोरोना बॉटम से जो रैली मिला था इसका टॉप ये था, एंड उसके बाद ये कई महीनों के कंसोलिडेशन में चला गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा एक साल. 1 year. एक साल के बाद ब्रेकआउट किया वापस. See how many times it retested and even breached it by a good margin. And उसके बाद जब ये ऊपर चलने लगा तो ऐसा लग रहा था कि it will run away, but it didn't run away. And even these waves on a monthly scale, if I see this top, this bottom, these are all overlapping waves. So, is this a monthly ending diagonal of some form? Possible. अगर ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है तो ये 5th वेव में एंडिंग डायगोनल बन सकता है. So A, B, C, D, E. Also, if you observe, it is like a showing a faster retracement kind of. Correct. On a monthly. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज रिलायंस का वेटेज काफी ज्यादा है निफ्टी पे, एंड बिल्कुल इस रेड लाइन के ऊपर खड़ा है अभी. If I look at volumes also, there were massive volumes here, but यहाँ इस पूरे खिचपिच में ज्यादा volumes नहीं है. But if I go to daily scale, this candle had massive volumes. This red candle. Tax impact. Correct. Windfall tax. Correct. So जो भी है यहाँ इतने volumes से कि जब तक इस candle के ऊपर नहीं चलता, there is a possibility that this can fall further, which means it will drag down the index, right? Not necessary, but unless the other, maybe HDFC Bank or something pulls it up. Yeah, Bank Nifty, Metro, Spend or IT, little pullback. अच्छा, अभी HDFC Bank ये तो मैंने options चर्चा में इसके ऊपर trade idea भी दिया है. This is at again a very key level. This 1305 and इसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए ऊपर है. But weekly price did not close above the 20-week moving average, 1390. It closed slightly above it by 7 rupees, which is a good sign. But it still has to get out of this channel. So again, कितना दूर जाएगा ये? Maybe it will go to the 200-day moving average, 1470. So ये दोनों स्टॉक्स में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है. So depending on how these two behave, we can fairly predict where Nifty will go. अगर हम इन दोनों पे नजर रखेंगे. Okay. I'll just spend 1 more minute. Key indices देखते हैं. PSU Bank Index has closed very, very well. This, in fact,
ये जून का कैंडल है और ये जुलाई का कैंडल है. 20 मंथ मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रांगली प्राइस आ गया है एंड इट लुक्स लाइक वन मेजर करेक्शन इज डन. और ये जो पिंक डॉटेड लाइंस है, आई थिंक द मोमेंट इट गोज अबव इट, this becomes extremely bullish. On daily scale, however, it still has to climb out of this triangular pattern, but it looks very, very good. Nifty Auto ने काफी खींचा था. इनफैक्ट अभी रिलायंस करेक्ट कर रहा था, ये सब हो रहा था, बट निफ्टी ऑटो स्टेट It is on a verge of a multi-year breakout. ऐसे लग रहा है. But if I go to observe one thing, Vijay, over here. Sorry, ये monthly है. It has where you have marked one, not the original black one. यहाँ पे जो उसके बाद में recent में जो move आया है, yeah, weekly है. So yeah, this what it has done is it has tested earlier resistance and given a pullback. यानी कि वहाँ से जो supply आना था, it has absorbed it. Now it is moving higher again. If it gives a breakout this time, just ये जो recent candle बना है, red candle, just last second candle है, red candle का जो doji candle का low है, this is an excellent stop loss to have because why that अगर ये false breakout नहीं है तो उसको ब्रिज करना easy नहीं है back again. तो इस लो से आप एक शानदार ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हो because it is a third attempt to cross that and which normally gives us excellent move. It has observed all the supply. So this looks like an interesting placed. If this gives a breakout, this can give an excellent trade opportunity, not to be missed. Right. Only sticky aspect is अगर ये पूरा थर्ड वेव के अंदर का वन था, तो टू यहाँ खत्म हो गया, और was it just A down and B up and C down still can happen. ये अभी देखना पड़ेगा क्योंकि again this does not look impulsive, this entire formation अभी तक. This is all overlapping waves, ठीक है, and काफी बड़ा रेड कैंडल बना फ्राइडे को. So ये एक unknown है ये. So this again one needs to keep in mind. I don't know auto stocks का कितना weightage है, शायद बहुत ज्यादा नहीं है. Then metals काफी बढ़िया करेक्शन. मेटल्स का वेटेज भी बहुत कम है, अभी तो और कम हो गया है आफ्टर करेक्शन. काफी अच्छा करेक्शन हुआ है. राइट नाउ इस पिच फोकस एकदम सेंटर लाइन से बाउंस कर रहे हैं. इंडेक्स निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल. दिस लुक्स वेरी वेरी बुलिश, अल्ट्रा बुलिश. मैं इसका वेव काउंट आई ऑलवेज शाइड अवे फ्रॉम लेबलिंग इट बिकॉज I was never sure कि is this 1-2 or not. But अभी ये वाला price action देख के confidence आ गया कि this is 1-2 and it's again subdividing into 1-2 and this is so third of at a very large scale. So broadly indices वैसे दिख रहे हैं. So देखना पड़ेगा IT stocks कितना run up करते हैं, वो भी देखना पड़ेगा. IT stocks ने भी काफी correction दिया है. Again IT index is at a very key level. 47,500 वहीं से बाउंस करके बस टिका हुआ है. देखना पड़ेगा कि करेक्शन खत्म हो गया या नहीं हो गया. मैंने डेली स्केल पे तो ABC लगा दिया है. We will know probably next week. Once if next week the price is closing above the 40-day moving average, then I will think कि this index is ready to go up. But keep a watch on Reliance and HDFC Bank. That would be my suggestion. Now back to you, Anand. Thank you, Vijay, for a detailed indices analysis. Now, what's something interesting? Historical pattern. What does this say? This is a Nifty monthly chart. There has been a historical pattern in a play. First standard disclaimer, this is not mine. ये मैंने कहीं पढ़ा था ऑनलाइन पे, you can say या WhatsApp groups में 2-3 years before. And if I am not wrong, this is of DC sir, Devendra Chaturvedi sir. I'm not too sure of that, but if I can remember correctly, I think it is of this study is of his. What does this say actually? Let us look at it just simple terms में.
किसी का भी हो, ये फायदे का है अपने को, उसको फॉलो करना इज इम्पोर्टेंट. Trapping, looking at the historical pattern and will it repeat or not. So what does this say is, normally what it has been observed is June low से July high. July में निफ्टी normally makes higher than the June high. जुलाई के हाई एटलीस्ट फ्यू पॉइंट से रहेगा, मगर जून के हाई से हाई रहेगा. दिस इज वन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर एडिशन टू दिस इज जून लो टू जुलाई हाई इज 8 to 10% काइंड ऑफ मूव एटलीस्ट, यानी 8% काइंड ऑफ मूव नॉर्मली मिलता है. उससे ज्यादा भी मिलता है बहुत बार. एटलीस्ट 8% काइंड ऑफ मूव फ्रॉम जून लो टू जुलाई हाई, यानी कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव देता है जून के लो से जुलाई हाई तक. अब वो जून के फर्स्ट वीक में बॉटम बना के हाई जाके फिर जुलाई में फर्स्ट वीक में हाई मार के फिर रिवर्स करता है, दैट कैन बी द केस. या जून एंडिंग में लो मार के फिर बाद में वहां से पुल बैक लेकर हाई मारता है, दैट कैन आल्सो बी द केस. हिस्ट्री में दोनों दिखे हैं व्हाटएवर. या जून में कंप्लीट रेंज बाउंड रखे फिर जुलाई में मार्केट हाई अप मूव मारता है. सो पाथ ऑफ ट्रेवल इज मार्केट वेल डिसाइडेड बाय मार्केट, बट जुलाई हाई इज नॉर्मली हायर देन द जून हाई. अगर हिस्ट्री में जाके देखे, अगर ये 2010, ये तो उनका स्टडी जिसका है वो 20 years प्लस का है. हियर आई विल लुक एट फ्रॉम लास्ट 10 years. दिस इज 2010. ऑब्जर्व दिस, जून लो जुलाई हाई. जून के लो से जुलाई हाई इज अराउंड 8% प्लस. एंड इफ इट, एंड जुलाई का हाई जून के हाई से हाई है. सेम 2011, दिस इज द जून लो, दिस इज जुलाई हाई. 2012 जून लोज जुलाई हाईज. यहाँ पे देखो जून में रैली दिया, जुलाई में फर्स्ट हाई मार के फिर देन मार्केट गिव अवे, यानी पुल बैक आ गया. 2013 जून में रैली, जुलाई में रैली एंड लास्ट में सेल ऑफ. Interesting. June low, this is July high. Sorry, there was a net connection error, maybe. Yeah. June low, July high. So what we observe is historically since 2010, if you go, only in 2019 यहाँ पे रेंज बाउंड मूव था मार्केट. जून का ही जून जुलाई का जो स्ट्रेटेजी था ये वर्कआउट नहीं हुआ था. और इस टाइम पे मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप हुआ था इसका, टीवी पे भी, इसके ऑलमोस्ट हर चैनल पे, एवरी व्हाट्सएप ग्रुप, एवरीवन वर एक्सपेक्टिंग कि ये फिर से प्ले होगा इन द मंथ ऑफ मई में, जून में ही. जून में जब सब जने एक्सपेक्ट करे तो मार्केट इज डन ऑपोजिट. अपार्ट फ्रॉम दस, पर इस बार देखो इसका पहले से कोई बात नहीं है. सो इफ दिस वर्क्स आउट अगेन, this also gives from 15,200 to, if we consider 8% at least, it gives a target around 16,400 near plus in the nifty. और जुलाई का, जून का हाई अगर देखो 16,790, उसको क्रॉस करना है 16,800, यानी प्राइस वॉल्यूम में वो पॉसिबिलिटी दिख रहा है. एंड इन दिस हिस्टोरिकल पैटर्न, अब 2010 से 2021 11 years का देख के और इससे पहले भी जाके देखोगे तो आपको एक आधी फेलियर मिलेगा, यानी 20 साल में सिर्फ 2 failures. It itself speaks of probability of the success of the pattern. So फिर से फेलियर के वैसा बनेगा जहाँ पे डाउन साइड में ट्रेंडिंग मूव देगा, या ये पैटर्न रिपीट होगा, कमिंग वीक में पता चल जाएगा. यानी जब तक 15,900 ब्रेक नहीं होता है, look for the target of 16,800. Probability of 16,800 getting tested in July series is very high based on the historical pattern, based on price and volume. But remember 16,800 17,000 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां से स्पेसिफिकली 16,700 से कॉशियस हो जाना चाहिए. As just now Vijay has showed in Elliott Wave, और I have shared the historical pattern of 20%, जो हमने जनवरी वीडियो में भी कहा था 20% का मूव. और फोर्थ वेव का जो एंडिंग का रिवर्सल जो दिखना चाहिए फास्टर, वो नहीं दिखा. एनीथिंग इफ यू कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन मूव, आई वुड गिव वेरी हाई. 16,700 800 से मार्केट कैन रिवर्स एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ डाउन साइड वंस अगेन. दिस वुड बी माय प्रिफर्ड बेट ओवर देयर. Before that, if we get very high volumes,
गाड़ी पलट लो भैया, 16,800 को भी भूल जाओ। वॉल्यूम दिख रहा है तो अपना काम क्या है, मार्केट को फॉलो करना है। अपने दिल को फॉलो करने से रुपये नहीं बनेगा, रुपये चले जाएंगे, दिल को फॉलो करेंगे तो। चार्ट्स को फॉलो करेंगे, मार्केट को फॉलो करेंगे तो ही रुपया बनेगा, ये याद रखिएगा मार्केट में। सो सही बात। ट्रस्ट द चार्ट, ट्रस्ट द स्मार्ट मनी, वो क्या करना चाह रहा है, फॉलो देम, यू विल बी ऑन अ विनर। बीइंग विद द विनर, यू विल बी ए पार्ट ऑफ द विनर एटलीस्ट, और यू विल मेक एटलीस्ट सम गुड मनी, जो एनी फील्ड में होता है। टेक अदानी स्टॉक्स। सो कीपिंग इट सिंपल, सिंपल एग्जांपल दे दिया है। सो अगर मार्केट में कुछ रिवर्सल दिख रहा है, वी विल डेफिनेटली अपडेटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज फॉलो द लेवल। अपडेट नहीं भी आ रहा है, लेवल जा रहा है भैया, 15,900 टूट रहा है, 16,100 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, मंदी कीजिए। लुक फॉर द टारगेट ऑफ 14,400 नियर अबाउट। अभी जुलाई में आता है, अगस्त में आता है, लेट मार्केट डिसाइड, यू जस्ट प्लान ए ट्रेड एज पर योर रिस्क। सो होपफुली ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। होपफुली यू हैव लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग टुडे। डू शेयर योर फीडबैक, डू शेयर योर सजेशंस for this watching a video. Please keep sharing, and your suggestions, your feedback will encourage us to throw some interesting patterns again, to share some interesting pattern, historical patterns again more. Yes. That's it from us for today. Hopefully you will be able to take good advantage of this analysis today's on any side wherever the move triggers, not to miss, because a big move is in a pending. 14,200 400 आता है या 16,800 से जाता है, यहाँ से आता है, एक बड़ा मूव मिलेगा, 1,500 2,000 पॉइंट का मूव। प्लीज उसको कैप्चर कीजिए। एज ऑफ नाउ बायर्स रिमेन्स अपसाइड। द मोमेंट लेवल ब्रेक्स और वॉल्यूम्स आर सीन, भैया गाड़ी बदल लो, चल लो अपने घर पे। See you again in a next week video. Till then, Yep. happy trading. Bye.